of what I have discussed in my previous class. As you all know, that we have started a topic which we call it as linear programming, which is nothing but the conversion of a real life problem in a business organization to a mathematical expressions, mathematical equations or inequations. And the condition is that the mathematical expressions or equations are linear in nature. That is, highest power of the variable is 1. And if you draw the graph, you will get a straight line. So converting problem into mathematical expressions or equation is the concept of linear programming. Likewise, I have discussed that when you write the linear programming, we call it as formulating linear programming. And formulation stands for three things. If you recall, if the question is formulate linear programming, then the first point that you have to do is that you have to write the objective function. Objective function, as I have already discussed, is represented by Z. Objective function can be the maximization or it can be the minimization. Like the problem, the two types of problem which I have discussed with you is the maximization of profit and the minimization of cost. Now, once you write down the objective function, the second set of equations or equations are the expressions of constraints. As you know that every problem in management is subjected to constraint. And we are looking for the best possible solution out of that constraint. So constraints is an inevitable fact of a business problem. And we have to understand this point very much, right? And now, once you write down the constraint, the last is non-negativity condition. So three things: objective function, constraints, and non-negativity condition that completes the formulation part of linear programming. Now, once we formulate it, then it's a time that we should solve it. And solutions can be done in many ways, but the easiest and the most popular way of solving the linear programming is the graphical method. Now, with this note, I would like to start up my presentation, briefing you about how to solve. I'm starting my PowerPoint presentation. Students, is my slides visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Fine, thank you. So I would like to refer to this problem, which I have discussed in my previous class, is the problem of maximization. Quickly, this problem is about manufacturing two types of product, A and B. And as you know that manufacturing requires certain set of input. Product A needs raw material of 2 kilograms and 4 hours of labor. That is 1 unit of product A. If we see the data about product B, 1 unit of product B needs 3 kilograms of raw material and 3 hours of labor. In all, a firm has 60 kilograms of raw material stock for a week, and they have an availability of 96 hours of labor. 1 unit of product A gives you the profit of ₹40, and 1 unit of product B gives you the profit of 36. A part of the problem is formulating LPP, which I believe that this formulation part, this is the formulation part, Z equal to 40x1 plus 35x2, which is the objective function. And what is this objective function? Profit maximization. See the constraint. The first inequation is the inequation of raw material, 2x plus 3x2 less than equal to 60. And the next is the constraint of labor hour, which is 4x1 plus 3x2 less than equal to 96. I'm not elaborating this point because this has already been discussed in my previous class. Last but not the least, non-negativity. As we all know that x1 and x2 are the number of units of product, how can it be 0 or less than, how can it be negative? It can be either 0 or more than 0. या तो ये 0 होंगे या 0 से ज़्यादा होंगे. So we have the condition of non-negativity, which we have to note it down. With this, if you go back to your problem, you will see that part B of the problem is not only formulation. As a manager, our job is that we want to know how many bags of product A and how many bags of product B
the farmer manufactured how many units of product A and product B that a firm can manufacture to maximize the profit. कितने प्रोडक्ट ए के बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बी के बनेंगे, so that we can maximize our profit. This is the job. So we are interested in knowing the value of x1 and the value of x2. हमें किसी भी तरह से x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है. As I have started with the note that there are different methods, but the most popular method is the graphical method. So what we need to do then? What is this graphical method? In the graphical method, you have to draw the graph. What is a graph? For drawing the graph, you may kindly refer to the two-axis system. What is this two-axis system? Horizontal axis, x-axis, vertical axis, y-axis. And in this x-y system, we draw the graph. Which graph I am referring to? Which type of graph I am referring to? I am referring to the graph of the constraints. The graph of the constraints. What are the constraints? 2x1 plus 3x2 less than equal to 60 and 4x1 plus 3x2 less than equal to 96. So these are the two types of constraints which we are referring to, and that we need to draw on the graph paper, right? The entire discussion revolves around how far you are comfortable in drawing the graph of these two expressions. Let us take one by one. The first one is 2x1 plus 3x2 less than equal to 60. आप graph कैसे बनाएंगे? The entire discussion revolves around this. Now, this is not a new thing. Drawing the graph of an equation or an inequation is not a new thing. You may please recall your knowledge of class 10th NCERT book, in which the equation is given to you and the exercise is there where you have to draw the graph, right? Now, graph means this is a linear equation, so we have to draw a line. Now, very basic thing. If you want to draw a line, how many points do you want? How many points do you require? Can you just give me the answer of this question? At least two. At least 2 points, right? At least 2 points. It's a very fundamental thing कि अगर मुझे कोई लाइन बनानी है तो कितने पॉइंट्स चाहिए? 2. ये 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट को बताया जाता है. उस वक्त उसको ये नहीं बताया जाता कि वो पॉइंट्स आएंगे कहां से. Here it's a time that if I want to draw 2x1 plus 3x2 less than equal to 60, I want to draw a straight line and I want 2 points. Now how do I get these 2 points? आप recall करें तो ये एक approach है which I am showing in front of you. What we need to do? हमें draw करना था. मैंने पहले ये लिए 4x1 plus 3x2 equal to 96 ले रहा हूं मैं पहले. So 4x1 plus 3x2 less than equal to 96. But for the purpose of plotting the graph, I have replaced the sign of inequality with the sign of equality. And now it is 4x1 plus 3x2 less than equal to 96. Now I want 2 points. How do I get the 2 points? The 2 points can be obtained if you see the table x1 and x2. First you put x1 equal to 0. Now if you put x1 equal to 0, how much of the value of x2 that you will get? You see my calculation, x2 will coming out to be 32. So point number 1 is x1 equal to 0, x2 equal to 32. Repeat the same step. Excuse me, sir. Yes, sir. Have you changed the slide? I'm showing this slide to you. Is this table visible? No, sir. Just wait. So we are doing question yes, sir. slide. Now it's visible. Okay, right. Is visible now? Yes, sir. Now, is this visible? Yes, sir. Now it's visible. Okay. So see here. I am saying this 4x1 plus 3x2 equal to 96. What is this? This is constraint 2. Now, important thing is, for the purpose of plot, for the purpose of drawing, I have changed the sign of inequality to the sign of equality. मैंने inequality के sign को हटा के equal to का sign रख दिया है. अब मुझे 2 points चाहिए. I want 2 points. First put x1 equal to 0. If you put x1 equal to 0 and you see my calculation, x2 will coming out to be 32. This is point number 1. x1 equal to 0, x2 equal to 32. Similarly, put x2 equal to 0. This time put x2 equal to 0, and if you put x2 equal to 0,
how much would be the x1 that you are getting? X1 with coming out to be 24. So x1 is 24. So x1, x2 are the values that we are getting out of it. They are 2 points. Now, the 2 points. Now I'm changing my slide. Is this slide visible? Yes, sir. Okay. Now see this point. First point. What is this first point? If you see x1, the first point which I am showing to you, this one, x1 equal to 0, x2 equal to 32. So x1 equal to 0 and x2 equal to point number J. See point number J. If it is visible to you, क्या आप point number J देख पा रहे हैं? Yes, sir. Are you? Yes, Okay. sir. So point number J is x1 equal to 0 and x2 equal to 32. Go back to the previous slide. x1 अब second point है x1 equal to 24 and x2 equal to 0. I'm changing my slide. x1 equal to 24 and x2 equal to 0. Point number R. Point number R को अगर आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, so J and R are the 2 points of constraint line this. Now if you join these 2 points, Sir, you have muted your mic. yes. Is my slide visible to you? Yes, sir. Yeah. So what I'm referring to point number J and point number R, which is obtained from this x1 equal to 0. First point is 0, 32, x1 equal to 0, x2 equal to 32, and the second point is 24, x1 equal to 24 and x2 equal to 0. After joining, you will get JR line. Is this line clear to you? JR? Yes, sir. Okay. Kindly refer to constraint number. Or if you do so, this line, the second line, in a similar way, you can solve this. The second line that is equal to 60. Now, when you want to plot it, replace the sign of inequality to equal to 2x1 plus 3x2 equal to 60. Now again repeat the same step. Put x1 equal to 0 and x2 equal to 0 one by one, and you will get 2 points. Now see point number P and point number T. So point number P is
x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 20। आप खुद अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। x1 इक्वल टू 0 रखिए और x2 निकालिए कितना आ रहा है, यू विल गेट दिस पॉइंट P। और फिर आप रिपीट करिए, x2 इक्वल टू को 0 रख दीजिए और x1 निकालिए कितना आ रहा है, यू विल गेट P and T आर द 2 पॉइंट्स। यू जॉइन दिस लाइन एंड यू विल गेट PT, द 9 PT। Sir, is the marked region is the feasible region? No, for I'm this? coming to this point later on. First, are you able to understand how to Yes, draw the sir, line? yes, sir. जो पहली लाइन थी JR वाली, उसको रेफर करें, राइट? नाउ जैसे ही आप उस लाइन को ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, the moment you draw the line on the graph paper, what it does, it divide the plane, it divide the graph paper or graph page into two region lying above to the line and region lying below to the line। जैसे ही आप वो लाइन ड्रॉ करते हैं, वो उस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक रीजन जो लाइन के ऊपर है और एक रीजन जो लाइन के नीचे है। नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हिच रीजन इट सबटेन्स, इट कवर्स। Is it covers the line? Is it cover the region above to the line, or is it cover the region below to the line? How do I decide? Like JR is a line, I'm not very sure whether it covers the area above or it covers the area below. Can anybody out of you tell me the method of finding out the answer of this question? कैसे मैं डिसाइड करूं कि नीचे वाला पोर्शन है या ऊपर वाला पोर्शन है, कौन सा एरिया ये कवर कर रहा है ये लाइन? सर जो हमारे कांस्टेंट है उन दोनों को फॉलो करना चाहिए सर। नहीं अभी तो नीचे वाला लाइन नहीं अभी सर वो लेस बात देन नहीं। इक्वल टू दे रखा होगा तो फिर सर अच्छा। लेस देन इक्वल टू दे रखा होगा तो नीचे वाला, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा होगा तो ऊपर वाला। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। अभी जो दोनों बातें आपने बताई वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, वो कभी सही हो सकती है और कभी गलत हो सकती है। ये जो अभी आपने दोनों बातें बताई ना, इन दोनों में पहली बात, जैसे जो अभी कह रहे थे कि रीजन है, दोनों कंस्ट्रेंट, तो दोनों कंस्ट्रेंट की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम पहले कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। अभी आप ये सोच के चलिए, इमेजिन करिए सिर्फ एक लाइन है, दूसरी लाइन है ही नहीं, यू हैव ओनली वन कोई भी रैंडम पॉइंट, सर कोई से कोई भी भी रैंडम random- पॉइंट ले लेंगे, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वही रीजन हमारा फीजिबल रीजन है। अब यहाँ पर एक बात आ जाए कि कोई सा भी नहीं, आपने बात सही कही, लेकिन वो पार्टली करेक्ट है। एक पॉइंट तो हम लेंगे, लेकिन कोई सा भी, कौन सा? एनीबडी कैन टेक, इफ यू टेक एनी पॉइंट 311, हाँ, that's a point. The reference point is the point of origin. That's a point. What you need to do is that you have to take a point, and it is not any point. It is a point of reference which is an origin. Origin क्या होता है? Origin is a point where x1 equal to 0 and x2 equal to 0. That is x और y दोनों 0 होते हैं वहां पर. Put the origin. Hello? Yes. Am I audible to you now? Yes sir. Okay. So Yes, sir. Okay. So the point is that we have this line JR, and which region is divided, we put the value of origin. अब जैसे आपने origin की वैल्यू रखी, that is x1 equal to 0, x2 equal to 0. आप मेरा कैलकुलेशन देखें, उसमें मैंने किया है x1 equal to 0, x2 equal to 0. You will get 0 plus 0, and then 0 less than equal to 96. 0 equal to 96. Now focus your attention on this answer. 0 less than equal to 96. Is this mathematically correct or mathematically wrong? That is, 96 is more than 0. Is it mathematically correct or wrong? करेक्ट सर। Correct. This is mathematically correct. Now if this is mathematically correct, अगर ये बात सही है, तो that means that origin satisfy. And now when origin satisfy, the region
below to the line that is covering the origin is a region. तो आपने देखा मैंने शेडेड लाइन ड्रॉ करी है, एरोज जो डाउन आ रहे हैं एरोज, ये शेडेड रीजन, और ये मैंने क्यों ड्रॉ करा, ऊपर का रीजन मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन. कंडीशन क्या थी, व्हेन वी पुट द ओरिजिन वी गेट 96 मोर देन greater than equal to 0, that is origin, right? Similarly you take the second line, और जब आप सेकंड लाइन में ओरिजिन पुट करेंगे, दैट इज pt में जब आप ओरिजिन पुट करेंगे, तो यू हैव x1 equal to 0 and x2 equal to 0, you put there and you will get the final 60 greater than 0. अब आपने 60 greater than 0 रखा, again think about it, is it mathematically correct? 60 more than 0? Yes, it is mathematically correct. Now when it is mathematically correct, that means that origin satisfy the condition. Now again, when origin satisfies the condition, that means that the region is that region which covers which fulfill the origin also, which covers the origin also, that is below. तो आप देखिए मेरी लाइन नंबर 2 में भी जो मैंने एरोस को किया है वो डाउन किया, तो दोनों लाइन में जो रीजन आ रहा था दैट इज बिलो. रीजन इज वेरी क्लियर, व्हाई, बिकॉज दिस इज द कंडीशन दैट ओरिजिन सेटिस्फाइज. तो हमने ओरिजिन को वैल्यू पुट करा और वी सेटिस्फाइज. तो नाउ इन नटशेल मैं रिपीट कर रहा हूं, वी हैव द फर्स्ट लाइन, द लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन टू पार्ट, अपर एंड द लोअर. Which part it covers, that has to be determined with the help of origin. Put the value of origin in the equation. If it satisfies, that means the region below, and if it does not satisfy, then the region above. In this case it is below. Line number 2 again repeat the same step and we get the region below. अब हमारे पास दोनों region below आ गए. ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसका पूरा पर्पस ये है कि वी आर लुकिंग फॉर फिजिबल रीजन. मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिजिबल रीजन. आपको याद होगा इससे पहले क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, फिजिबल रीजन, फिजिबिलिटी और फिजिबल रीजन. आवर एंटायर जॉब इज फिजिबल रीजन. व्हाट इज फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन इज अ रीजन वेयर वी एक्सपेक्ट द सॉल्यूशन, जहां पे हमें उम्मीद है कि हमारा सॉल्यूशन होगा. तो व्हाट इज अ फिजिबल रीजन? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फिजिबल रीजन, इट इज दैट रीजन व्हिच सेटिस्फाइज बोथ द कंस्ट्रेंट्स, दैट इज कंस्ट्रेंट नंबर 1 रॉ मटेरियल एंड कंस्ट्रेंट नंबर 2 लेबर आर. दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा. तो if it is satisfying both the conditions, now let us see here, if my graph is visible to you, we have different region. अब कौन सा रीजन इसमें है उसको चेक करने के लिए हमें एक एक करके सारे पॉइंट चेक करने पड़े. let us take one by one. सबसे पहला पॉइंट नंबर J. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या पॉइंट नंबर J दोनों रीजन में फॉल कर रहा है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के? Is it falling in both the regions? No. J is not because J falls only in line number 1. It is not in line number 2. So J वो फिजिबल रीजन का कॉर्नर नहीं है. अब P पे आइए, पॉइंट नंबर P. Check whether it falls in the region of line 1 and line number 2 both or only one. क्या P दोनों रीजन? बोथ, राइट. सो P दोनों में आ रहा है. दैट इज आवर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रीजन इज P. अब आप ओरिजिन पे आइए, O, जो छोटा सा O नजर आ रहा है आपको, स्मॉल O. व्हाट डू यू से अबाउट O? डेफिनेटली इट फॉल्स इन बोथ द रीजन. सो P एंड O. लेट्स मूव टुवर्ड दिस साइड. नेक्स्ट पॉइंट इज R के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों रीजन में आ रहा है या एक रीजन में आ रहा है? Is it in one region or both the region? दोनों रीजन में सर. दोनों रीजन में आ रहा है R. So R point is POR. अब T पे आइए, वेरी इंटरेस्टिंग. T के बारे में आप क्या कहेंगे? वन रीजन और टू रीजन? वन रीजन सर. I request all the students to please try to understand. In case if there is any doubt, feel free to raise, to ask, to clarify. Please don't hesitate. तो सब लोगों से मैं कह रहा हूँ T पे गौर करें और T को देखें कि क्या T दोनों रीजन में आ रहा है या एक में आ रहा है. I am getting the answer that it lies only in one region, that is line number 2. It is outside line number 1. तो जब outside है तो फिर ये feasible region में नहीं है, दोनों को satisfy नहीं कर रहा. So T is not included. Let's talk about Q. What do you say about Q? That is a point of intersection between line number 1 and line number 2, and this is a very important point. ये Q क्या है? Q कहां से आया? Q is the line of intersection
और क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों रीजन में आ रहा है या एक रीजन में आ रहा है? दोनों में से दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स अ कॉमन पॉइंट। तो फाइनली नोट डाउन करिए, पॉइंट नंबर P पहला पॉइंट हो गया, फिर O हो गया, फिर R हो गया, फिर Q हो गया। तो PORQ और POQR, whatever you call it as, PORQ कह दीजिए, PQRO कह दीजिए, doesn't make any difference. So final region, common region, feasible region, that is which satisfy both the constraint is PORQ. This is the feasible region. What is the feasible region? This is the region where we expect our solution. Ab, try to understand and note this point. This has been assumed and this has been verified that the solution, that is the optimal solution, lies at the corner point of the feasible region. Now what is this? What are the corner points? P पहला, O दूसरा, R third and Q fourth. So P, O, R, Q are the corner point. So this has been estimated that we have to check इन चारों में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसपे हमारा फिजिबल हमारा ऑप्टिमल आंसर आएगा. Now just think about it. Just wait. What do you mean by best solution? What do you mean by optimal solution? क्या है optimal solution? क्या है best solution? तो जिस पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम आए. Exactly. Objective function is profit maximization. उस पे दोबारा जाते हैं. Which is objective? Z equal to 40x1 plus 35x2. So actually, I want the value of x1 and x2 where Z attains its maximum value. हम x1 और x2 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और देखेंगे कि किस कॉम्बिनेशन के ऊपर Z की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यानी किस वैल्यू पे x1 और x2 की Z अटेन्स दी मैक्सिमम वैल्यू. हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आ गए? हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आ गए, 4 कॉम्बिनेशन आ गए x1 और x2 के. वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ x1 and x2. What are these 4 combinations? These are the corner points. So I would this is the table. Now please try to understand this table. POQR. P, value of x1 and x2, and when we put the value of x1 and x2, you get the value of Z. ये Z की वैल्यू कहां से आ रही है? From where do we get the value of Z? And x1 in which equation? Z is equal to 40x1 plus 36x2. 40x1 plus 36x2. Here मैंने 35 लिख दिया है, 36x2. So right. So if you put it, this is 700. Put origin 0 0. Automatically this is 0. Put Sir, Q. have you changed the slide? मैंने change मैं दोबारा कर दूँ. Is this visible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yeah, is this slide? Kindly refer to this. POQR. P के कोऑर्डिनेट्स, P की वैल्यू हमें पता थी, Q, O की हमें पता है और R की हमें पता है. P, Q, P, O, R हमें पता है. The only unknown is Q. What is Q in this feasible region? What is Q? Q क्या है? मैं इसे रेफर कर रहा हूँ. At which both the lines intersect each other. Is this slide visible? Is this slide visible? Yes sir. Yes. ये स्लाइड विजिबल है, ठीक है. इसमें Q को देखिए क्या है. What is Q? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो आप बताइए कि अगर इज दिस अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ डू आई डिटरमिन द वैल्यू ऑफ Q? Do you know the method of knowing the value of Q, calculating the value of Q, if it is a point of intersection? So yes. कैसे? Simultaneous linear equations solve कर. एग्जैक्टली 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा. 2 इक्वेशंस हैं, दोनों साथ में लिखी हुई है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है. आप उनको सॉल्व कर लीजिए. बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के. जैसे एक मेथड है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और एक मेथड है सब्स्टिट्यूटिंग द वेरिएबल. तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट आप कर लीजिए. आप जब इक्वेटिंग द दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, प्राइमरीली वी हैव टू सॉल्व विच 2 इक्वेशन? ये जो 2 इक्वेशंस हैं, 2x1 plus 3x2 equal to 60, 4x1 plus 3x2 equal to 96. ये स्लाइड विजिबल है मेरी? ये स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? Yes sir. दिस स्लाइड. तो ये दो इक्वेशंस हैं, 2x1 plus 3x2 equal to 60 and 4x1 plus 3x2 equal to 96.
These are the two sides. Now what you need to do is you have to solve this. तो अगर आप इसको solve करेंगे, can you solve it now and check what is the value that you are getting out of it? क्या आप सॉल्व करेंगे उसे? x1 18, x2 8. Is this the value q which is there in my table also, 18 and 8? All of you? Yes, sir. So you put it in the objective function. अब आप objective function में इसको put करिए, you get the value 1000. And similarly r. बताइए सब लोग, बताइए ये टेबल और इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, z की जो वैल्यूज आ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं उसको? ये लास्ट टेबल है. Am I able to make you understand? And if not, please don't hesitate. Please don't hesitate. No, sir, didn't understand. अच्छा, which part is not, you are not able to understand, please? Sir, shaded portion वाला तो समझ आ गया, उसके आगे क्या किया आपने वो अब नहीं। आप, अच्छा, अब शेडेड पोर्शन जब आपके समझ में आ गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिजिबल रीजन आप लोकेट कर पा रहे थे? क्या है फिजिबल रीजन? POQR। POQR। इसके कितने कॉर्नर हैं मोहम्मद अकदस? 4 कॉर्नर है। P, तो अकदस ये बताइए P की वैल्यू क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है? x1 और x2 की वैल्यू क्या है P के? सर आप स्लाइड चेंज करेंगे तो बता पाऊंगा। अच्छा बता। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा आप सब लोगों से थोड़ा वैल्यू को नोट करते चलिए आप, ठीक है? अब P को, ये टेबल, मेरी स्लाइड नजर आ रही है आपको अकदस? सर स्लाइड नंबर 14। हाँ, ये जो टेबल है ये नजर आ रही है आपको? यस सर आ रही है। तो इसमें P की वैल्यू देखिए क्या है, 0.20 है, ठीक है? 0.20। इस वैल्यू को आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? 45x1 प्लस 36x2, राइट? ओके। जब आपने उसमें पुट करा तो कितनी वैल्यू आएगी z की आपके पास? चेक करिए। How much is the value that you are getting out of it? Is it 700? 700। राइट। यस। अब इसी स्टेप को आप रिपीट करिए O के लिए भी, R के लिए भी। वैल्यू को पुट करिए, क्योंकि फिजिबल रीजन के 4 कॉर्नर हैं। आपने बारी बारी से वैल्यू को पुट किया एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ z, राइट। ठीक है? राइट। इसमें एक डिस्कशन है इंपॉर्टेंट कि q की वैल्यू कहां से आई? q विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू दे रखी है 18 और 8, कहां से आई? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस वैल्यू ऑफ 18 एंड 8? तो उस पर डिस्कशन अभी हुआ था। बताइए और कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो किसी के? It's okay, sir. Now we can move to next question. हाँ, ओके, जस्ट बताएं मुझे तो उसमें लिस्ट कैसे आती है, ये देखना चाह रहा था मैं, लिस्ट कैसे आती है? यस, So, any more question from your side, please? तो अब ये फाइनल आंसर क्या हुआ? Is this the final answer? The final answer is at which point the value of z is maximum? At which point the value of z is maximum? At Q. At Q, right? 18 and 8, which is 1000. So final answer is x1 equal to 18 and x2 equal to 8. So the question, अब क्वेश्चन पे जाइए, ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर. If you see this original question, yeah, is this slide visible? Original question.
Slide is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So see, what is our question? How many numbers of product A and how many number of product B the company manufactures to earn the maximum profit, to get the maximum profit? तो अब आपका आंसर क्या होगा? कितने A बनाए? 18 और कितने B बनाए? 8. So 18 units of A and 8 units of B gives you the maximum profit of 1000 rupees. This is the final. Quickly, what we need to do, read the question carefully, draw the table first. Repeat कर रहा हूँ, table draw करना बहुत जरूरी है. Once you draw the table, then after you formulate, write objective function, write constraints, write non-negativity, then draw the graph paper and locate the feasible region. Be careful in drawing the feasible region. This is the most important step. Now once you locate the feasible region, check at each corner point, the value of objective function. Wherever you get the maximum value of the objective function, that is the answer that you are looking for. ये वो आंसर है जिसकी तलाश हमें है. Finally we get it. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, Q की वैल्यू पॉइंट Q जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो कैसे आया है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया, 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, वो दोनों इक्वेशंस कौन सी थी? पहली बात, हाउ टू सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू एंड पुट इट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और फिर लास्ट पार्ट कि कहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ है. दैट्स इट, इट्स अ पॉइंट. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Can you just refer back to question number 2? Right? Is it slide for question number 2 visible? Yes, sir. No, sir. Okay, straight. Now it is visible? Yes, sir. Okay. Visible now to all of you? Yes, sir. Yes, sir. I request all of you to kindly read this question carefully and formulate the problem. मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, एक 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ. आप जब तक इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करिए, LPP लिखिए. What do you mean by formulation? Write objective function, write constraints, and write the non-negativity. And those who have already done it, try to draw the graph. और फिर मैं आपसे बात करूँगा. Take a break for 2-3 minutes and then I will join.
समझ आ गया समझ
Hello. Yes, sir. Sir. So are we all together? Are we all here? Okay. Yes, sir. So have you tried drawing the graph? Okay, good. Tell me first of all your confusions. Those who have attempted this question, tell me first your confusions, please. Any question from your side? When you see this question and you draw the table and you draw the equations for formulating, सबने objective function लिख लिया? Everybody have the objective function? कोई confusion about you know, about writing the constraints? Any confusion about non-negativity condition? Any question about graph? Am I audible? Am I audible to you? Yes, sir. Okay. That means that my presentation is here. So if I quickly move to the solution part of this question, this is the table, this is the constraint. Sorry, yes, no. This is the constraints, and this is the. Is this slide visible to all of you? Yes, sir. Okay. See the A part of the question, which is formulation part. Constraint की conditions को देखिए पहले. 20x1 plus 50x2 greater than equal to 4800. ये sign जो greater than equal to का ये सही है? Or is it something else? Is it correct? Are you all agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And what do you say about the second? 80x1 plus 50x2 greater than equal to 7200. I hope this is also clear. Nitrogen फर्टिलाइजर की और फॉस्फेट फर्टिलाइजर यानी मिक्स की जो कंडीशन है वो आपके सामने कंस्ट्रेंट की फॉर्म में है. एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1 and x2. व्हाट इज x1 and x2? x1 and x2 द नंबर ऑफ बैग ऑफ मिक्सचर A एंड नंबर ऑफ बैग ऑफ मिक्सचर B. और क्वेश्चन यही है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मिक्सचर A दैट इज x1, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मिक्सचर B दैट इज x2, सो दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर इज मिनिमम. Now again we have to go to graphical method. Graphical method is this. If this slide visible है आपको, जो मैंने आपको फोटो दिखा रहा हूँ बुक का, is this visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, see this. See the constraint line number 1 and constraint line number 2. और इसमें interesting point ये है कि region is not below the line. The region is above the line. ये बड़ा interesting part है इसका. इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रीजन था वो बिलो द लाइन था एंड वी कैन फॉर्म द फिजिबल रीजन. यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि फिजिबल रीजन इफ यू चेक इट इज कमिंग अबव. ये कैसे आ रहा है आप एक एक करके देखिए. पहले लाइन देखिए पीटी की लाइन, तो फर्स्ट लाइन है पीटी. अगेन दिस इज 80x1 plus 50x2 equal to 7200 and if you put the origin you will get the region above to this line. Similarly, the line KR, which is 20x1 plus 50x2 equal to 4800. If you put the origin, it will not satisfy. And if it will not satisfy, it lies the above region. That is, the bounded region is above to that. दोनों में common points तलाश किए गए तो निकल के आया PQR. ये जो 3 points हैं PQR are the points where these 3 points satisfy the constraint 1 and constraint 2. That is, they lie in both the regions. And that forms the feasible region. Interesting point is that this is an open feasible region where we have 3 corner points P, Q and R. अब आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको point P, point Q and point R के coordinates को, that is x1 और x2 को objective function में रखना है. What is objective function? Z equal to 40x1 plus 24x2. If you put it, I hope that you will get it down like this. So आपने value को put किया and you will get it. So if you do so,
you will get your answers of this, which is the feasible answer. Can anybody out of you check it out कि P, Q और R की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? What would be the final answer? Which point is the point where the cost is minimum? Sir, point P. Point P. This time it is not Q, the point of intersection, right? It's not Q, it's not R, it's point P. All of you please cross check. And if it is point P, what is the value of point P? That is, what is x1 and x2 at point P, by the way? 0 and 144. 0 and 140, right. So at 0 and 144, the cost of fertilizer, spreading fertilizer in the agriculture field is minimum. That is the point. So with this, I would like to conclude today's class, where the purpose is that to make you understand, number one, formulating, and number two, drawing the graph paper and finding the feasible region, and then locating the corner point and getting the value of the objective function. And according to the nature of objective function, whether it is maximization or minimization, we finalize that which is the optimal solution. I will share this PowerPoint presentation with all of you with these two examples. In case if you want to refer it at any point of time, you can do it. Okay? Shall I conclude? Any more question from your side? सर इस वाली प्रॉब्लम में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लिया है? To get the answer of this question, आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा. आप देखिए, for example, the first condition is that the Agriculture Research Institute suggested a farmer to spread at least 4,800. So this word at least stands for minimum, that is कम से कम 4,800 4,800 kilogram of special phosphate fertilizer needs to be spread out. So if it is at least, Yes, sir. so what sign would you like to put it there? Less than equal to or more than equal to? More than. Yes sir. Great. Similarly, not less than 7,200. वही at least को replace किया गया not less than 7,200 for nitrogen fertilizer. Not less than mean इससे कम नहीं होना चाहिए. तो इससे कम नहीं यानी इससे ज़्यादा ही होना चाहिए. तो 7,200. Okay. Yes sir. Thank you sir. Okay. So thank you very much. I will conclude my session, and again we will join back to you. We have a limited time left, students. So I will inform you about my class if possible. Tomorrow I can engage another session. मैं आपको inform कर दूंगा और कल मैं क्लास लूंगा. ठीक रहेगा? Okay sir. Okay. Get ready for the class tomorrow. I will inform you in advance. Okay, sir.